क्योरा एंड नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके? होपफुली यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, मैं काफ़ी दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा था, बट इसका ट्रिगर आया व्हेन आई विजिटेड दिस लिविंग माओरी विलेज कॉल्ड फाका रेवा रेवा। आई नो, गया सर के ऊपर से। रुको ज़रा, सब्र करो, आते हैं। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते हैं। सो एज यू नो, न्यूजीलैंड इज़ अ लैंड ऑफ स्टनिंग लैंडस्केप, लाइक एब्सोल्यूट नेचुरल ब्लिस एंड मोर शीप देन यू कैन पॉसिबली काउंट। बट यहाँ पर जब आप रहते हो ना, यू रियलाइज ये जो कंट्री है, दिस इज अ ब्लेंड ऑफ माओरी हेरिटेज एंड मॉडर्न इंग्लिश कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ न्यूजीलैंड विद इंग्लिश इज ऑल्सो टीरियो माओरी। और ये जो मैं क्योरा एंड नमस्ते बोलता हूँ ना, इसमें क्योरा इज एक्चुअली माओरी, इट मीन्स हेलो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के साथ ब्लेंड हो गए हैं न्यूजीलैंड में। फॉर एग्जाम्पल, फनाओ विच मीन्स फैमिली, काय विच मीन्स फूड, हुई विच मीन्स मीटिंग। जब आप यहाँ पर रहोगे ना, तो you will use these words interchangeably with English. By the way, Maori में WH is fa, not wa. खैर, also, how can I miss Kapa Haka? This is the traditional Maori dance. ये यहाँ की जान है। Like अगर आप All Blacks जानते हो, न्यूजीलैंड की रग्बी टीम, इनका सबसे फेमस हाका है, which they do at the start of any game. और अगर आपने कभी इसको रियल लाइफ में देखा ना, I promise, आपके goosebumps आ जाएंगे. This is pure New Zealand identity, my friend. वैसे न्यूजीलैंड एंड माओरी इज़ अ वेरी डीप टॉपिक एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर इट हेयर, बट कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लेना। द माओरी कल्चर इज डीपली एम्बेडेड इन न्यूजीलैंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल। यूल सी दिस इन एजुकेशन सिस्टम्स, सेलिब्रेशंस, आर्ट एंड क्राफ्ट एवरीवेयर। तो लेट्स डीप डाइव, और शुड आई से इन माओरी, लेट्स वनांगा। जो माओरी लोग थे ना, दे वर पॉलिनेशियन आइलैंड पीपल. These were expert sailors. They used to navigate sea through, looking at star patterns, ocean currents, like they had top-notch skills to go around the ocean. Or Maori found New Zealand, or Aotearoa as they call it, around 13th century. Aotearoa in Maori means the land of long white cloud. वैसे this all happened around 13th century, but archaeologists में around debate भी होती है कि when was this, but let's call it 13th century. After this, Maori started living on this land. New Zealand was actually very rich in resources. They also lived on this island and traded with other islands. और इस isolated living की ना काफ़ी powerful storytelling करी Maoris ने अपने culture में, through songs, dances, art and craft. And of course, यहाँ पर resources की भी fight थी between different Maori iwis, different cultures, all Maoris but still fighting for resources. By the way, fight से याद आया, ये जो हाका डांस है ना, दिस इज एक्चुअली अ इंटिमिडेशन डांस. माओरीज यूज्ड टू डू दिस बिफोर वॉर्स टू इंटिमिडेट देयर एनिमीज. वैसे माओरी डांसेस सिर्फ इंटिमिडेशन के लिए नहीं है, इसमें वेलकमिंग डांस भी होते हैं. अगर आपने कभी किसी की न्यूजीलैंड आने की वीडियो देखी हो, लाइक अ सेलिब्रिटी कम्स इनटू द एयरपोर्ट, इसमें एक माओरी वेलकम होता है. दिस इज अ ट्रेडिशनल हाका एज वेल, बट परफॉर्म्ड टू वेलकम द पर्सन. और ये जो ऑल ब्लैक्स हाका करते हैं, दिस इज कॉल्ड कामाटे. दिस वॉज कंपोज्ड बाय माओरी चीफ ते रोपराहा. और मेरी जो माओरी की प्रोनाउंसिएशन है ना, वो वैसी है जैसी जग्गू दादा की हिंदी, तो काम चला लेना. ये बोलो. सो गोइंग फॉरवर्ड इन आवर स्टोरी, बिटवीन 13th century एंड 1779 न्यूजीलैंड में काफ़ी कंट्रीज का इंटरेस्ट था, स्पेशली फ्रांस. बट इन 1779 इन कम्स मिस्टर जेम्स कुक. और यू नो, जब यूरोपियंस आते हैं, व्हाट फॉलोज? वी इंडियंस ऑलरेडी नो अबाउट इट. तो आगे थोड़ा शॉर्ट में करके बताता हूँ. इन 1840 ट्रीटी ऑफ वाइटांगी वॉज साइंड बिटवीन द माओरी एंड द ब्रिटिश. दिस रिकग्नाइज्ड माओरी लैंड राइट्स बट ब्रिटिश गवर्नेंस. बट ये जो ट्रीटी थी ना, इसका इंग्लिश एंड माओरी ट्रांसलेशन वॉज क्वाइट कॉन्वोल्यूटेड. This led to a lot of conflict. This was called the Land Wars between 1845 and 1872. But in सबके बीच में Maori population continued to plummet and British settlers continued to come to New Zealand. By the way, this treaty is still valid. In 1975, a Waitangi tribunal was also established and several settlements have been reached on this. So in present day, this bicultural nation
the relationship between Maori and the Pakeha, that's noun Maori, keeps evolving. वैसे on a positive side, there is an ongoing sentiment in New Zealand to promote Maori culture. तो ये जो अपना living Maori village है ना, Whaka Rewa Rewa, this is an effort to actually promote Maori culture in New Zealand. ये काफ़ी hot spot है tourism का in Rotorua. By the way, this is a modern day semi-rural living, which is inhabited by 300 Maori families. 811 एकड़ की land है. This was actually first settled in 1325 by Tiarawa people, or they have been promoting tourism and welcoming people to show the geothermal activity and way of life since 1800s. So when you actually visit this place, there's a lot of way to absorb the Maori culture. तो हमने choose किया सबसे पहले the traditional performances, and they were the star of the show. We went and saw the haka. अच्छा, this place is full of geezers. और जो way of life है ना, from nahana to khana, is all based on geothermal activities on the earth. By the way, the cooking method that you see here is called hangi in Maori. Public opinion on colonization and its legacy in New Zealand varies a lot. कुछ लोग इसको व्यू करते हैं like the dark chapter in country's history, acknowledging the injustice faced by the Maori people. बाकी लोग emphasize करते हैं कि progress जो हुई है recent years में honoring the treaty of Waitangi and promoting the Maori rights. Overall ये जो topic है ना, ये काफ़ी complex है और multifaceted है. But जो ongoing progress है, it's always good to see it. I learned a lot by visiting this place. और एक बात तो तय है, अगर आप कभी न्यूजीलैंड आओगे, you would definitely see the Maori identity in this place. This place is actually quite unique in itself and the culture as well. So when you come here, don't forget to visit Whaka Rewa Rewa or protruding tongue, which is called wheteo, and added with the flexible muscles and the guttural sounds coming from within, was all used as an act of defiance. So when confronting the enemy would hopefully take fright, turn around, run away,